Educators of the Zar campus, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni Ilma. Students, as you know, the COVID-19 situation, it is requested to stay at home and be safe. Class 4 Mathematics, Unit number 3, Fractions. Week number 4, Lecture number 2. Today's topic is Revision of Unit number 3 and Worksheet of Unit number 3. Students, open your books. Unit number 3, Fractions. Page number 35, Fractions. You have to highlight the following lines which I am going to read. Fractions are a part of something whole. When an object is divided into number of equal parts, then every part is a fraction of the object. And exercise number 1 will be done on your books. Page number 36, exercise number 2 will also be done on your books. Highlight the definition of proper fraction. A proper fraction is one where the numerator is smaller than the denominator. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाएगा तो आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. A unit fraction represents one whole which means the numerator is equal to the denominator. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो वो यूनिट फ्रैक्शन होगा. An improper fraction is one where the numerator is bigger than the denominator. For example, 3/2. Here, the numerator is bigger than the denominator, so this is an improper fraction. A mixed number has a whole number and a fraction with it. For example, 1/2. 1 is a whole number and 1/2 is a fraction. Exercise number 3, page number 37 will be done on your books. Here, I'm going to do the 3 examples of different fractions. Part A, 3/5. Here the denominator is smaller than the numerator. This is the proper fraction. Part I, 5/2. Here the numerator is bigger than the denominator. It is the improper fraction. Part K and E, where the numerator and denominator are the same. It is the unit fraction. Part F and L, where 3 whole 1/2 and 2 whole 6/9 are the mixed numbers. Page number 38, those fractions that have the same denominator are called the like fractions. वो fractions जिनकी denominator same हो उनको हम like fractions कहेंगे. In like fractions, the larger the numerator, the greater is the value of the fraction. Here the 5/8 and 3/8 are the like fraction. Here the numerator is 5 is greater, so we will write down the greater sign here. Those fractions that do not have the same denominator are called the unlike fractions. वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे. पेज नंबर 39, लोएस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म. इसकी डेफिनेशन है टू रिड्यूस द फ्रैक्शन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर अंटिल इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे जब तक वो और किसी टेबल के साथ डिवाइड ना हो सके, उसको हम लोएस्ट फॉर्म कहेंगे. Page number 40, comparing fractions. When comparing fractions, first change them into equivalent fractions with the same denominator. जब आपने एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते. पेज नंबर 42, this line is below the exercise number 9. When comparing more than 2 fractions, take the LCM of the denominators of all the fractions. जब आपने एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है आपने उनके डिनोमिनेटर्स का LCM लेना है और LCM लेने का मेथड आप लोगों को वीडियोस में शेयर कर दिया हुआ है. पेज नंबर 44, addition of fractions. If the denominators of the fraction being added are the same, we add the numerators of the fractions keeping the denominator the same. अगर आपके पास एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं और उनके डिनोमिनेटर सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड आप उनके न्यूमरेटर्स को करेंगे और डिनोमिनेटर उनका सेम रहेगा. Fractions with different denominators. To add such fractions, first convert the denominators of the fractions so that they are the same, then add them as usual. For more complicated addition of fractions, take the LCM of the denominators as practice when comparing the fractions. जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है और आपने उनको ऐड करना है तो आप उनका एलसीएम लेके उनको आप इक्वल करेंगे, फिर आप उनको ऐड कर सकते हैं. 47, subtractions of fractions. When denominator of the fractions being subtracted are the same, then just subtract the numerators keeping the denominator the same.
जब आपने दो फ्रैक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और उनकी डिनोमिनेटर सेम है तो आप उनके न्यूमरेटर्स को आपस में माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर उनका सेम रहेगा. And when the denominators are different, change them into fractions that have the same denominators. अगर आपके पास फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो आपने उनको एलसीएम के मेथड के थ्रू उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है और फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. Page number 49, multiplication of fractions. To multiply fractions, multiply all the numerators together and all the denominators together to get the product. जब आपने एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे. Page number 51, division of fractions. When dividing one fraction by another, turn the second fraction upside down and then just multiply. Turning the fraction upside down makes the fraction its reciprocal. जब आप एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो आपने सेकंड फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन कर देना है. अपसाइड डाउन करने का मतलब यह है कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा और डिवीजन साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा. जब इस मेथड को हम कहते हैं रेसिप्रोकल. To divide mixed numbers or mixed fractions, first convert them into their improper fraction and then divide them as usual. जब आपने किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करना है आप उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे फिर आप डिवाइड कर सकते हैं. टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, टेक द डिनोमिनेटर ऑफ द होल नंबर b to be 1. Students, you have to do the exercise number 1, 2 and 3 on your books and learn all the definitions which I have highlighted in this video. Now we will do the worksheet. Students, you have to do this worksheet on your neat copies. Dash are the part of something whole, fractions. When an object is divided into a number of dash parts, then every part is a fraction of the object equal. A dash fraction is one where the numerator is smaller than the denominator, proper. A dash fraction presents one whole, which means the numerator is equal to the denominator. Unit. A dash fraction is one where the numerator is bigger than the denominator. Improper fraction. A dash fraction has a whole number and a fraction with it. Mixed fraction or a mixed number. Those fractions that have the same denominators are called like fractions. Those fractions that do not have the same denominators are called unlike fractions. To reduce a fraction, divide the numerator and denominator with the same number until it cannot be divided is called lowest form or lowest term. When dash fractions, first change them into equivalent fractions with the same denominator. Comparing. You have to do the following parts and exercises on your neat copies. Students, now note down your homework.